जी, अब बताएँ कि आप लोग स्क्रीन को सही से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? तो आज जो है हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल का जो नेक्स्ट पार्ट था, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आवाज़ क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस, नो जो भी आपको सुनाई पड़ रहा हो, या वॉल्यूम और बढ़ाने की ज़रूरत है तो भी बताएँ। ओके, गुड। सो अब हम लोग जो है शुरू करते हैं इसको। वेरी गुड। तो टुडे shall I explain everything in English or Hindi or both bilingual? Please write down in the chat so that I can listen to you. जी, all right. So levels of communication. When we talk about communications, as we first talked about the kinds of communication, and this is the second part, which is called levels of communication. So communication occurs at different levels of complexity and reach, each serving distinct social and professional functions. So communication जो है वो different levels पे जो है हम उसको we use it in a different places, in a different way, on a different platform, and it has its own, distinct social and professional function. Like when we are interacting with our family, we have a very different kinds of communication. But when we talk about our life to the stranger or to the new people, we explain or we express ourselves in a very different way. Similarly, when we are doing something in the group, we talk in a slight different, like slightly different. So each time it is differing, each time we are expressing in a different way. तो आज जो है हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नंबर वन, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरनल डायलॉग और सेल्फ टॉक दैट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। जब हम अपने दिमाग में खुद ही बात करते रहते हैं तो उसको जो है हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसके जो है विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक इट इन्वॉल्व्स पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। जो whenever we think about it and we express and we reflect within ourselves and we talk about the personal awareness or personal reflection. So in that case, the intrapersonal communication is going on. Then second is influences decision making and behavior. So it also play a important role to, like, the way we make a decision and the way we behave to others. So इसमें भी ये जो है एक important role play करता है। जो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है जिसमें आपका इंटरनल डायलॉग चल रहा है, यानी दिमाग के अंदर आप खुद से ही बात करते हैं और ये इंडिविजुअल माइंड में हो रहा है। आप पर्सन जब तन्हाई में होते हैं या इवन इवन इफ यू आर इन अ गैदरिंग बट यू आर pondering, you are thinking about something and you are having an internal dialogue in your brain, in your mind. So that is called that is called intrapersonal communication, and it involves personal reflection, self awareness, like how you behave, how you make a decision,
and forms the foundation for external communication. But ये जो प्रोसेस है, ये हमारे जो दिमाग में हो रहा है या चल रहा है, which actually reflect to the outer world, to the external communication. First of all, we think, and we process our brain, we process our thought, like what is going on, what we think individually, and then we express it, and we express it to the somebody or to someone. So जो external communication जब होता है, वो उसमें जाकर ये उसका result नजर आता है कि the moment you are talking, how do you behave, your behavior, or if you want to make a decision, that also that is also based on your internal dialogue. अब इसके प्रैक्टिकल जो कुछ एग्जांपल्स है which we will talk about. We will talk about some very exclusive, we can't say exclusive, but something which is very common in our general life, like decision making. अगर आपसे कोई सवाल किया जाए कि आज आपको ये काम करना है और आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ नया करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप के पास एक सवाल होता है, एंड यू थिंक अबाउट दैट. सो जो डिसीजन मेकिंग होता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. should I accept this job offer or wait for a better opportunity, or like should I, for example, you have multiple works, and then you want to decide which work shall I do first. So shall I go to market, or shall I attend a class, or shall I scroll on YouTube, anything. So that is your decision making. So you always use this intrapersonal communication in order to uh, make a decision. Is it clear? Any doubt, any question? Please feel free to raise your hand and ask question. दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है? लाइक मेंटल वर्किंग थ्रू प्रोजेक्ट चैलेंजिंग. लेट सपोज यू गॉट अ project, and where you have to solve something, you have to make this project ready, you have a due date, and you need to use your mental faculty, you have to use your knowledge, you have to use your expertise, and you solve a problem. So there also it plays an important role, which is called the intrapersonal communication. And then third one is this self reflection, which is very important, very vital, in order to grow oneself. Like how do I handle the difficult conversation or difficult situation. So आप क्या करते हैं कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं. आप जैसे कहते हैं ना, जब हम आईने में झांकते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं. बट उसी तरीके से व्हाट वी डू, वी क्लोज अवर आईज एंड वी ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, वी ट्राई टू सी विद इन आवर सेल्फ. हम अपने अंदर झांकते हैं एंड रिफ्लेक्ट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बैड हैबिट्स आई हैव, आपकी अच्छाई क्या है, आपकी बुराई क्या है, आप कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं, कौन सा काम बुरा कर रहे हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने लाइफ में जो है ना एक फास्ट प्रोग्रेस ला सकते हैं, कैसे आप अपने ओवरऑल जो आपका एक ऑरा है उसको आप बेहतर कर सकते हैं. तो रिफ्लेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है. जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, उसके अंदर आता है. फिर आता है गोल सेटिंग, लाइक प्लानिंग योर डे एक्टिविटी एंड प्रायोरिटीज. लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू इन द मॉर्निंग. लाइक नॉर्मली व्हाट हैपेंस, either we when we wake up, you have some rituals, you offer morning prayer, some people do puja, or some people are worshipping different way. And either there is another choice, you start scrolling on YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, rather than having your daily plan, your daily goal, your daily activities. Some people wake up in the morning and wakes up and go to gym. So goal setting also plays an important role, which comes in the same uh, it comes in the interpersonal communication. I hope this is clear. So
Now I'll move forward. So the next is interpersonal communication. The, so interpersonal communication, what is the definition of interpersonal communication? 101, okay, one on one communication between two individuals, like when two people are talking to each other, which is called interpersonal communication, typically involve establishing rapport. So rapport means here a relationship. Like there is a some sort of like you build a good rapport, you build a good relation when you are having a dialogue for a long time. So this is how. So what are the key features of this interpersonal communication? First of all, it is direct interaction between two people. Like rather than having somebody in the as a mediator, you talk to somebody directly first. Second, can be face to face or through various media. So this could be either face to face or through different channels. So how can we, what would be the sources of different channels? We can talk over a phone call, we can talk on a video call, we can attend a Zoom call, we can attend a Google Meet, and like we by using various methods of technology, we interact, like two people or two individual interact each other. Involves both verbal and novel it involves both verbal and नॉन वर्बल एलिमेंट. सो इसके अंदर जो है, जैसे हमने इसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो ये इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है. मैंने इसलिए बोला कि ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो मेक श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम 1 to 4. जैसे जैसे आप इसको देखेंगे, समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, चीजें जो है ना और क्लियर होती जाएंगी. सो बाद में भी इसको रीच आउट करें और इस पर ट्राई टू मेक अ नोट्स, टॉक अबाउट दिस, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस इन योर फैमिली. किसी को भी घर में आप बताने लगे, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपका रिवीजन होगा एंड यू विल रिमेंबर द पॉइंट्स. आपको रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे. You just need to internalize this information and then use it in a proper way. फिर आता है requires emotional intelligence and empathy. So obviously it's very natural when two people are talking, uh, definitely they will have some sort of emotions. Like when you are talking, I mean, you cannot be like and having an odious face or just looking like shun nothing. I mean, you have to be creative, you have to be you should look like genuine, and you should have that emotional intelligence and empathy, like you care about the other person, his issues and everything, like which is concerned to each other. Practical examples. Now we will move to the practical examples. So practical examples में क्या होता है कि working place mentoring. So mentorship is an important thing. Like mentorship जब आपके होता है, when you have somebody who is guiding you, who is mentoring you, you actually progress rapidly. आप बहुत तेजी से जो है ना progress करते हैं. तो senior employee guide a junior colleague. So like when you are working, uh, you're working in a team, you're working in a company where you are being trained. So your senior, either your colleague or senior employee guides, like senior employee guides you. इस तरीके से जो वर्किंग प्लेसेस होते हैं जहां पर आपको मेंटोरशिप मिलता है. मैरिज काउंसलिंग, लाइक कपल डिस्कसिंग रिलेशनशिप challenges. Let's suppose you are getting married. Before getting married, what do? You actually talk about everything, in what will happen in future, how you're gonna spend rest of the life, or what are your expectation from me, like they is ask each other about the expectation. तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें इसमें आता है कि काउंसलिंग, कपल डिस्कसिंग रिलेशनशिप चैलेंजेस, कि रिलेशनशिप की चैलेंजेस क्या आते हो सकते हैं उसके बारे में आप. these are the practical example. Like sales conversation,
represent representative building relationship with potential client. So this is again what is happening. It's having a dialogue between two people, either sales representative to the client, or either a teacher to the student, or a mentor to his apprentice. इस तरीके से जो है लाइक सीनियर कलीग टू हिज जूनियर कलीग, ये सारी चीजें हो रही हैं. सो फ्रेंड, द फोर्थ फोर जो आता है वो कहलाता है फ्रेंडशिप इंटरेक्शंस. like friends sharing personal experience and advices, like when you are in the class, or when you are in college or anywhere, or you have some friends, when you are having or facing some issues or challenges in your life, what happens, you actually talk, you share your things, you share your personal issues or challenges, or this could be happiness, sadness, challenges, any sort of emotion, and you get a piece of advice. So this is a very friendship interaction. Now moving forward, the third, which is group communication. So what do you mean by group communication? So can you have a look at the definition? The definition of group communication is communication among a small number of people, typically involving meeting, panel, or team discussion. Like a very simple example for the students, when you are learning English, or and you are having a GD, like group discussion. So, or when you have a project, or when you have a seminar where you have been divided into different groups, and then you discuss, you come out with a plan and present something. So group communication happens in that case. सो अब इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं. It involves multiple personalities and roles. So when you are having a group discussion, it involves so many things, like multiple personalities, and you have multiple roles. Like when you are acting, when you want to act, or play, you want to act a role of character. So, and there are different characters, then you discuss, you plan out everything, and then you know stage it, you show it on the stage. Or when you are being, like, somebody has made you the head of a group, and you are actually giving piece of advice to the others, so you are acting, or you are communicating with the multiple person, and you are playing a role there. फिर more complex than interpersonal communication. So it is more complex than interpersonal communication. So interpersonal communication में क्या हो रहा था कि दो लोगों के बीच बात हो रही थी, बट यहाँ पे दो लोगों के बीच बात नहीं हो रही है. यहाँ पर जो है वो दो से अधिक लोगों की बात हो रही है. Requires facilitation and coordination skills. So when you are having a group discussion, or when you are having a group communication, you need, or you require some sort of skills, which is coordination skills or facilitation skills. When you are addressing a group of people, and when you're working with your team, so what do you coordinate for each step, for each you know each step, and then there you need a coordination skills, you need to facilitate, you need to mm, you know s- demonstrate the skills you have acquired in the communication skills, like the coordination, management, everything. So the what would be the practical example for this? So let's see further. Project team meeting. So department heads planning quarterly objectives. When you are having a meeting, or which is like a project team meeting, when you are having a project, when you are, when many people are working on a project, and you want to present that in the quarterly, when you are planning to present this report to your head of the department. So in that case, you actually talk to
every single individual who are who are working on the project, and then uh, you coordinate and then present this. Like academic seminars, students discussing research finding with the professors. Like let's suppose there is a group of students who are working on a project, and whatever the findings you get it, and you discuss it with your professors. Like focus group, marketing team gathering consumer feedbacks. So the salesmans, or the usually when they do, when they are having survey, जब आप वो लोग सर्वे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फीडबैक्स कंज्यूमर्स के आते हैं वो उससे जो है एक निष्कर्ष पे, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू वर्क एज ए प्रोडक्ट। फॉर प्रोडक्ट के लिए जो मार्केटिंग टीम जो होती है वो उस पर इंफॉर्मेशन लेते हैं, देन दे एनालाइज एवरीथिंग। उसके बाद आता है कमिटी वर्क। सो board members making organizational decisions. So these are the some practical examples for group communication. Then there comes the public communication. So moving forward to the public communication. सो पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ लार्ज ऑडियंस थ्रू स्पीचेस, लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन। के जब जैसे कोई नेता, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग के, पब्लिक कम्युनिकेशन के, लाइक व्हेन अ लीडर इज एड्रेसिंग टू हिज audience or to his subject, or when there is a speech, or when there is a lecture. So lecture could be about the science, about the arts, about the religion, anything, or when there is a speech. तो जब एक लार्जर ऑडियंस को जब हम एड्रेस करते हैं, सो दैट कम्स इन द डोमेन ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है? क्या मेंटेनिंग क्लैरिटी अक्रॉस डाइवर्स ऑडियंस बैकग्राउंड्स, के जो डाइवर्स ऑडियंस है उन पर जो है वो आप क्या करते हैं, उसको उसमें क्लैरिटी रखते हैं। यू लाइक मेंटेनिंग क्लैरिटी अक्रॉस डाइवर्स ऑडियंस बैकग्राउंड्स, की जो ऑडियंस की जो बैकग्राउंड्स हैं, बेस्ड ऑन दैट आई मीन यू डिलीवर योर लेक्चर, यू गिव योर speech, keeping audience engaged through presentation. So in order to engage the audience, you use different techniques, like you're using presentation, giving some visuals where people are engaged, like adapting message for varying experience level. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में आता है कॉन्फ्रेंस की नोट। तो जब आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो देर आर मेनी पीपल, और पीपल फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट प्रेजेंटिंग टू ए 500 प्लस अटेंडीज। तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, या कोई भी किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है, जब वो की नोट एड्रेस कर रहा होता है, तो ये जो है पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। उसके बाद जो है आपका रहा यूनिवर्सिटी लेक्चर, लाइक प्रोफेसर टीचिंग 200 स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी कोर्स। Let's suppose you're having this course communication in everyday life, where more than 800 students are enrolled. So when you are actually taking a class of 200, 300 people or 400 people, so that comes again in the public communication, like because you are actually interacting with a large audience. It's not very selective, like 20 people, 30 people. Then टाउन हॉल, मेयर एड्रेसिंग कम्युनिटी कंसर्न। सो जब टाउन हॉल, अगेन इट्स लाइक जो मेयर होते हैं वो जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो उनको वो जो कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं वो कर सकते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन। सो सीईओ अनाउंसिंग कंपनी चैलेंज चेंजेस टू ऑल एम्प्लॉइज। तो जो कॉर्पोरेट के अंदर जो चेंजेस आता है, जो सीईओ
जो है वो चीज़ों, कंपनीज की जो न्यू पॉलिसीज या न्यू कंप्लाइंसेस आते हैं, जो व्हेन दे आर एड्रेसिंग टू द न्यू एम्प्लॉयज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपका पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? सो मास कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है communication reaching vast audience through media channel like television, radio, newspaper और internet platform. So जिसे आपका बना मास मीडिया का जो कोर्स होता है, लाइक व्हेन यू आर रीचिंग टू द लार्जर ऑडियंस, व्हेन यू आर रीचिंग टू द पीपल थ्रू channels, like that channel could be media, television, radio, newspaper, internet. So YouTube is again one of the kinds of mass communication where people are actually uh, recording and sending their message, and those who are interested, they are listening, they are watching. Or let's suppose like the channels, news channels, which they are using media, YouTube as a medium to express their thoughts, opinions about the society or things are which are happening. So अब इसके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? It reaches thousands or millions of the people. So जो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि you are reaching like millions and millions people at once. Like you are, let's suppose you are live on radio, and you and the people all across the nation are listening to him or her. Often one way communication. तो mass communication का एक और फीचर ये है कि it is one way communication. Like somebody is addressing and the rest of these listening. There is not like very face to face interaction, which is called the interpersonal communication. Influence public opinion or social trends. Let's suppose there is an influencer who talks about anything and people are being influenced, or if a leader of critique criticize somebody and that becomes a trend, so that also becomes a social trend. Requires careful message crafting. अब इसकी जो एक फीचर ये है कि बिफोर यू एड्रेस जो आपके मैसेज होंगे, जो आप बोलना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको जो है बहुत ही केयरफुली आप उस मैसेज को क्राफ्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल्स जो इसके हैं, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन एंकर रिपोर्टिंग ब्रेकिंग न्यूज। तो सबसे पहला जो आप सारे लोग जानते हैं कि टेलीविजन, जब कभी भी हम टीवी खोलते हैं और जब कोई ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होते हैं, तो एक तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग जो है उसका पहला फीचर है, जो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर इसको व्हाट डू यू मीन बाय मास कम्युनिकेशन. सो the best example to understand mass communication is news broadcasting, where an anchor reporting about the breaking news. अब ये हो गया. इसके बाद जो है इसमें जो चीजें हैं वो आता है आपका सोशल मीडिया कैंपेन. सो कंपनी लॉन्चिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस कैंपेन और educational content, online courses reaching global learners, public health announcement, government communicating vaccination information. So ये जो है, ये सारी चीजें जो है आपके इसके अंदर में आते हैं. अब कुछ इसके जो है ना इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो एज इफ ना यहाँ तक कोई इशू है? सॉरी, आई गेस वो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको. तो फिर इसमें जो आपको आ रहा है सोशल मीडिया कैंपेन, कंपनी लॉन्चिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस कैंपेन और एजुकेशनल कंटेंट, ऑनलाइन कोर्सेज रीचिंग ग्लोबल लर्नर्स, फिर पब्लिक हेल्थ अनाउंसमेंट लाइक गवर्नमेंट कम्युनिकेटिंग वैक्सीनेशन इंफॉर्मेशन. सो दीज आर दी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन. एज इफ ना अगर कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर पूछें, चैट बॉक्स में लिखें, या अगर इज इट कि आज के लिए ये काफ़ी है, तो आई कैन स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो. जो भी आपके
का फीडबैक है, प्लीज राइट डाउन इन द चैट. तो अब आ जा रहा है इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि कैसे हम जो है जो शुरू में यानी प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था टाइप्स एंड, अभी हम जो पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे हम जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे और प्रैक्टिकल इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम इसको अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, हाउ वी कैन यूज दिस इन आवर डे टू डे लाइफ. लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व्स combining multiple types across different levels, कि जो आपका जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है ना हम जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो कंबाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे. वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या है? पहला एग्जांपल उसका है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन. तो जब जब आप कंपनी में जॉब करेंगे या जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में इजीली, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग नाउ, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. लाइक लेवल वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन. देन टाइप में हो जाता है कि वर्बल है, इंस्ट्रक्टर स्पीकिंग, विजुअल में जो है आपका पावर पॉइंट स्लाइड्स आ गया, रिटेन में जो हैंड आउट्स हो जाते हैं, नॉन वर्बल में इंस्ट्रक्शन, जेस्चर, लिसनिंग और पार्टिसिपेंट्स इंगेजिंग. तो ये जो है ना एग्जाम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन के एग्जाम्पल्स है. दूसरा एग्जाम्पल है मार्केटिंग कैंपेन. जैसे मार्केटिंग कैंपेन आजकल जो हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं या अलग अलग जगह पे जो एडवर्टीजमेंट आता है, वो उसका मास कम्युनिकेशन. तो पहला जो है ना आपका जो लेवल वन जो फर्स्ट एग्जांपल था वो ग्रुप कम्युनिकेशन से था. दूसरा जो है वो है मास कम्युनिकेशन, लाइक द विजुअल एडवर्टीजमेंट्स, रिटन सोशल मीडिया पोस्ट, वर्बल रेडियो कमर्शियल्स. तो ये सब जो है एग्जांपल्स हैं आपको दोनों चीज़ों को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं डे टू डे लाइफ में. अब उसके आगे आते हैं पर्सनल, फिर उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट टिप्स. अब इसके क्या क्या जो है ना, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो टिप्स हैं वी विल डिस्कस अबाउट दिस, के वो क्या क्या है. वो ये है कि सबसे पहले जो है आप assess your current strength in different communication types, लाइक जो अभी मौजूदा हाल में जो आपके जो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं, कैसे आप उसको डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते, हाउ यू कैन यूज एंड स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन. दूसरा है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग इन ऑल इंटरपर्सनल इंटरेक्शन. जब एक दूसरे से जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली क्या करें आपकी उसको एक्टिवली सुने, यानी व्हेन यू इंगेज योरसेल्फ इन लिसनिंग अटेंटिवली इट विल हेल्प यू आउट. मैच कम्युनिकेशन टाइप्स टू द ऑडियंस नीड एंड कॉन्टेक्स्ट. तो आप जैसे बेस्ड ऑन द ऑडियंस आप अपनी बात को रखें, उससे जो है आपको जो है ना प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगा. लाइक डेवलप विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल presentation, like when you want to work in public domain, or you want to work with the government or with the corporates or anywhere. I mean जो visual communication है उसको भी अपने professional life में through presentation you can incorporate. Write clearly and concisely for professional document. तो जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही क्लियर वे में लिखते हैं, तो वो जो है दैट एक्चुअली गिव्स यू, वो एक जो है ना इट एड्स अ वैल्यू टू योर राइटिंग, टू योर पर्सनालिटी. अब कंक्लूजन जो इसका ये है क्या है कि अंडरस्टैंडिंग बोथ द काइंड्स एंड द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एम्पावर्स अस टू चूज एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन. के जब हम काइंड्स और लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को जब एक साथ लाएंगे, so it actually helps you to empower, or it gives you an method